on our way. 10 minutes till the location. And we did not find any single trash can, which is sad. So that's why Surabhi is carrying that all the time. And now we are going for the cruise, which will leave at around 1:15. We are within time, but still, let's see. So this is the line, and we are going on the cruise. It is super crowded. तो मैंने सब पहन लिया है, सनस्क्रीन एंड ऑल। मेरे पास कुछ भी नहीं है। वैसे भी बहुत फेयर है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। So look at this location now. We are halfway or more than halfway done, and we are coming closer to the Seal Rock. This is the Seal Rock, and you know why they call it Seal Rock? Because there are seals on it. And this is where we are right now. This is crazy. Actually, look at it. So this is the waterfall, and now we are going right underneath. This is huge. I think you can see. Look at the size of it. Look at the view, the location. Look at it. We are almost at the end. We are heading back now, and we are still getting amazing views which we never thought we would see in this life. Look at this. Done with the whole experience. How was it, Sophie? It was too good. It was out of this world. I mean, we were there for 2 hours. पर मैंने एक भी टाइम ऐसे मुझे लगा नहीं कि मुझे फोटो नहीं खींचना चाहिए. Yeah, it's like every second you felt like actually clicking a picture because it used to change. असं sunlight यायचा मग जायचा असं. खूप मस्त होता. It was too good. Now we are going to the secret spot. And weather. And the weather, yeah. Yes. The weather throughout the journey was bad, but when we reached here and throughout the 2 hours,
It was great. It didn't rain, right? Yeah, it didn't rain at all. And they say that if it doesn't rain Rain for for 3 days. 3 or 4 days, then it's a drought here. So we kind of came on a drought day. Yeah, drought day. Now we are going to the second location to click pictures, Yes. and then we will head to Tiano. So bye. Cruise. हम लोग वापस आ गए हैं. अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटो निकालेंगे एंड देन वी विल गो बैक, बिकॉज वैसे भी अभी सब लोग वापस जाने की जल्दी में होंगे, सो हम लोग को ट्रैफिक मिलेगा एंड अगेन ऑल द फेमस स्पॉट्स विल बी ऑक्यूपाइड. तो उससे अच्छा हम लोग अभी फ़ोटो निकालेंगे और फिर हमारी जर्नी, रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे. सो सी यू देन, बाय. ओके, सो वी आर इन टियानो नाउ. काफ़ी अच्छा था जर्नी फ्रॉम मिलफर्ड टू टियानो. हम लोगों ने थोड़ी जगह पे रुक के फ़ोटोज़ भी निकाले. सो दिस इज़ आवर रूम. इट इज़ नथिंग स्पेशल, बट जहाँ पे हम लोग हैं वो लोकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वी आर नॉट पेइंग दैट मच. लाइक जो एक दिन का हिल्टन का था रेंट, उससे हम लोग हाफ भी नहीं पे करे फॉर द होल डे. And the location is really nice. As you can see, we have our mountain view. The weather is superb right now. So अभी हम लोग यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि सो कभी ज़्यादा कुछ बाहर का खाती नहीं है, सो इसलिए हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं अभी. एंड देन वी विल हैव आवर डिनर बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 7:30. या बाहर देख के ऐसा लगता नहीं है, बट इट इज़ ऑलरेडी 7:30 और यहाँ पे सनसेट अराउंड 9:30 होता है. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर आवर डिनर. उसके बाद आके थोड़ा टाइम पास, थोड़ी एडिटिंग फ़ोटोज़ की, एंड उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को कल एटलीस्ट 8:39 तक यहाँ से निकलना होगा, बिकॉज वी हैव एटलीस्ट अराउंड 6 hours ऑफ टोटल जर्नी टाइम. सो वो कंप्लीट करने के बाद वी विल रीच एशबर्टन, और इसके बाद वहाँ पे रोहन को मिलेंगे. सो नथिंग मच आफ्टर दैट, वी विल चिल, एंड देन नेक्स्ट डे वी विल टेक द फ्लाइट टू ऑकलैंड. गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द लास्ट डे. हम लोग अभी जा रहे हैं ऑकलैंड के लिए. सो वी आर हेडिंग टू द ड्रॉप ऑफ पॉइंट फॉर द कार. वहाँ से हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे क्राइस्टचर्च, और वहाँ से हम लोग की फ़्लाइट है 11 बजेगी, 11 सवा 11 बजेगी. सो हम लोगों ने कल स्टे किया रोहन के यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया, वो उसका खुद का घर है. सो आई डिडंट फील कंफर्टेबल टू शूट कि क्या है कैसे वो दिखाने के लिए. सो दैट्स इट. हम लोगों ने वहाँ पे डिनर किया, देन वी स्लेप्ट. अभी वो कब तक अराउंड 7:30 रेडी हो गए. अभी 8:30 बजे हम लोग निकल गए. ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द जर्नी, साउथ आइलैंड वाज एक्चुअली वी सॉ बोथ द सीजन्स काइंड ऑफ, विंटर एज वेल एज समर, क्योंकि हम लोग जब आए तभी बहुत ही बेकार वेदर था. और उसके बाद जैसे हम लोग पिकनिक में मतलब एंड ऑफ द डेज, मतलब लास्ट 3 days वेदर काफ़ी अच्छा हो गया. सो विच वॉज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग. सो हम लोगों ने सब मोस्ट ऑफ द स्पॉट्स तो कर लिए, सिर्फ एक पजल वर्ल्ड रह गया और एक फार्म हम लोग जाने का प्लान करने वाले थे, पर वो एक रह गया. पर दोज वर नॉट प्रायोरिटीज टू बी ऑनेस्ट. मेन था मिलफर्ड साउंड, प्रिंस टाउन, उसके बाद जो लेवेंडर फील्ड्स थे वो, टिका वो बना था, वो सब तो बहुत ही अच्छे वेदर में हो गए. सो दैट्स व्हाई इट वाज काइंड ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रिप. नाउ वी विल ड्रॉप ऑफ द कार एंड देन वी विल टॉक अगेन ओवर द एयरपोर्ट. सो सी यू देन गाइस. So we are all done with the picnic, and now we are headed to Auckland. So how was it? It was really good. Oh, it was really good. Overall, it was fine. The first time that we have been here. काफ़ी मज़े आए. So yeah, looking for the winter time because we will most probably come back in winters और snow देखने के लिए. So now we will head back to Auckland. All security and everything is done, and this is the Christchurch.